Assalamu alaikum. Chapter number 2, Using the Scientific Method. Translation of page number 1. All of us have benefited. Benefited means फ़ायदा उठाना. Profited. हम सब ने फ़ायदा उठाया है. Greatly, बहुत ज़्यादा. From the use of scientific method. साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से. In solving problems. मसाइल को हल करने में. Such as जैसा कि those वो हैं dealing with mean to say about मुतल्लिक होना. The maintenance of health सेहत को बरकरार रखने के. The production and preservation production पैदावार and preservation महफूज करना और foods यानी कि खाने को पैदा करना और महफूज करने से. The construction of our homes construct करना तामीर करना अपने घरों को तमीर करने से हो. एंड द इम्प्रूवमेंट बेहतर बनाना. इन कम्युनिकेशन ज़राए मवासलात एंड ट्रांसपोर्टेशन नकलो हमल यानी कि गाड़ियों का निज़ाम. कहते हैं हम सब ने फ़ायदा उठाया है उन तमाम मसाइल को हल करने में जिनका ताल्लुक़ है सेहत को बरकरार रखने से, खाने को पैदा करने और महफूज करने से, घरों को तामीर करने से और हमारे बातचीत के निज़ाम ज़राए मवासलात और आने जाने के निज़ाम ज़राए नकलो हमल से हैं. इनसे मुतल्लिक़ तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमने साइंसी तरीक़ाकार से फ़ायदा उठाया है. Not only have our ways of living changed. इन साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करके हमारे सिर्फ रहने का अंदाज़ ही तब्दील नहीं हुआ, बट people themselves have also been changed. बल्कि लोग खुद भी तब्दील हो चुके हैं. Today आज we are better able. हम बेहतर तरीके से काबिल हैं to explain elaborate करने के वजाहत करने के. Happenings important है. Happenings mean वाक़यात यानी कि events, incidents which used to be considered thought जो जाने जाते थे माने जाते थे. Strange अजीबो गरीब. Odd and mysterious यानी कि confuse करने वाले. Perplexing यानी कि ऐसे वाक़यात जिनको पहले अजीबो गरीब और नाकाबिले बयान माना जाता था आज हम उन्हें बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं. Although अगरचे there is still need for improvement. इतना सब करने के बाद अभी भी ज़रूरत है बेहतरी लाने की. We are now generally less fearful. लेकिन अब हम हैं कम डरे हुए, कम खौफज़दा. Then our fathers and grandfathers were यानी कि ancestors यानी कि हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत अब कम खौफज़दा और कम डरे हुए हैं. We are also more critical important है. Critical means तनकीद करने वाला यानी कि fault finder गलती ढूंढने वाला, कमी ढूंढने वाला. In our thinking than our ancestors. हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत अपनी सोच में ज़्यादा तनकीदी हो गए हैं यानी कि हम चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से. Ancestors important. This lesson should help you. ये लेसन मदद करेगा आपकी अंडरस्टैंड समझने में हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड कि कैसे साइंसी तरीक़ेकार ने या साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल ने हैज़ इम्प्रूव करना बेहतर करना बेटर करना. लिविंग कंडीशंस रहने के अंदाज़ को कैसे बेहतर किया है. एंड चेंज्ड पीपल और लोगों को कैसे बदला है. यानी कि ये लेसन आपकी इस बात को समझने में मदद करेगा कि साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से हमने कैसे अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके को और लोगों को तब्दील किया है. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in our everyday living. ये लेसन आपकी इस बात को भी समझने में मदद करेगा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंसी तरीक़ेकार का बहुत अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि ये दो बातें हमें बताई गई हैं जो ये लेसन हमें सिखाएगा या बताएगा. फर्स्ट बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़. कंट्रोल करना, काबू करना, ओवरकम करना यानी कि थाम लेना, बीमारी की बेहतर रोकथाम.
اس کے بارے میں رائٹرز ہمیں پہلے پاسٹ سے کچھ ایگزامپلس دیں گے اور اس کے بعد پاسٹ کو کمپیئر کریں گے پریزنٹ، یعنی کہ پریزنٹ کی سچویشن بتا کر. If you had been born 200 years ago، اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے، you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old، تو 8 میں سے صرف آپ کے پاس ایک موقع ہوتا زندہ رہنے کا. In other words، دوسرے الفاظ میں in those days، ان دنوں میں about 7 out of 8 babies died، اگر 8 بچے پیدا ہوتے تھے تو ان میں سے 7 بچے مر جاتے تھے before reaching، پہنچنے سے پہلے their first birthday، یعنی کہ 1 سال یا پھر اپنی پہلی برتھ ڈے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ 7 بیبیز مر جاتے تھے اور صرف ایک بیبی پہنچ پاتا تھا اپنی فرسٹ برتھ ڈے تک. یعنی اتنا نایاب تھا زندہ رہنا کہ 8 میں سے 7 بچے مر جاتے تھے اور صرف ایک بچے کو جینے کا موقع ملتا تھا یا پھر اپنی فرسٹ برتھ ڈے تک جانے کا موقع ملتا تھا. Suppose you had been an unusually means غیر معمولی طور پر، unexpectedly، uncommonly، strong little fellow kid child and had lived through that first year. اس لائن میں رائٹر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ آپ ایک غیر معمولی طور پر بچنے والے بچے ہوتے جو مضبوط تھے اور اس 1 سال کو گزار لیتے. ویری لائکلی مینس پاسبلی، یعنی کہ بہت امکان تھا. بیفور، اس سے پہلے. یو ور 6 years old، یعنی کہ امکان تھا کہ آپ اس سے پہلے کے 6 سال کے ہوتے. یو وڈ ہیو ہیڈ اسمال پاکس، تو آپ چچک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچڈ دا ایج آف 12، اور اگر آپ اس بیماری سے بھی بچ جاتے اور 12 سال کی عمر تک پہنچنے تک، یو وڈ undoubtedly mean to say without any doubt، surely you had measles، تو آپ خسرے کی بیماری میں. whooping cough کالی کھانسی میں. scarlet fever سرخ بخار میں. اینڈ diphtheria خناق کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوتے. Even then your battle means fight، your struggle for life was not over، پھر بھی زندگی کے لیے آپ کی لڑائی ختم نہ ہوتی. یلو فیور زرد بخار. ملیریا. ٹائفس کھولیرا ہیضہ. ٹائفوئڈ فیور معدی بخار. اینڈ ایون انفلوئنزا نزلہ زکام. ون اسٹارٹڈ ایک دفعہ شروع ہوتا. اسپریڈ پھیل جاتا. تھرو اے کمیونٹی مین ٹو سے ایریا، اس پورے علاقے میں یہ بیماریاں پھیل جاتی. مطلب پراپر ہمارے پاس ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا. اگر ایک بندے کو ہوتی تو اس سے پوری کمیونٹی میں یہ چیزیں پھیل جاتی تھی ان پاسٹ. لائف واز موسٹ انسرٹن امپورٹنٹ ہے. انسرٹن مینز انشیور، یعنی کہ زندگی بہت غیر یقینی تھی. A person who lived to be more than 30 years of age، ایک شخص جو 30 سال سے زیادہ عمر جی لیتا تھا، was indeed در حقیقت fortunate امپورٹنٹ ہے. fortunate means lucky، اس کو خوش قسمت مانا جاتا تھا. It is unbelievable امپورٹنٹ ہے. It means ناقابل یقین، incredible، یہ ناقابل یقین ہے. That کہ such conditions could have existed present، کہ ایسی صورتحال موجود تھی. So short a time ago، تھوڑا عرصہ پہلے. Today babies are born in hospitals، اب بچے ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں. اب وہ ہمیں پریزنٹ کا بتا رہا ہے. Where there is little likelihood امکان ہونا، possibility of their getting a disease، کہہ رہا ہے کہ اب پریزنٹ میں بچے ہاسپٹلس میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں پر انہیں بیماریوں میں مبتلا ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں. ینگ پیپل آر ٹریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیم، ان نوجوانوں کا علاج کیا جاتا ہے انہیں بچانے کے لیے اگینسٹ اسمال پاکس چیچک، ڈپتھیریا خناق، اینڈ ٹائفوئڈ فیور معدی بخار سے. یعنی کہ ان بیماریوں سے بچانے کے لیے ان نوجوانوں کا علاج کیا جاتا ہے. یہ ہمیں پریزنٹ کے بارے میں رائٹر بتا رہا ہے.
Today, a person can expect करना, उम्मीद करना, तवक्को करना, hope to live to be almost 70 years old, यानी कि अब एक शख्स 30 साल से ज़्यादा यानी कि 70 साल उम्र गुजारने का इरादा कर सकता है या उम्मीद कर सकता है. In other words, दूसरे अल्फाज में more than 30 years have been added to the expected length of man's life के पास्ट में माना जाता था 30 साल हैं जीने के लिए, लेकिन अब साइंस के आने से तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अरसा उस टाइम पीरियड में ऐड कर दिया गया है, जिससे लगभग 70 ईयर्स हमें हासिल होते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए. These changes have been made possible, और ये सब कुछ मुमकिन बनाया गया है by use of the scientific method, साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके. To solve such problems as the causes of disease and its prevention. Prevention important है. It means control, overcome, काबू में लाना. बीमारियों की रोकथाम और उनसे बचाव, ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो ये सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स के इस्तेमाल की वजह से हुआ है. तो इस पैसेज में राइटर्स ने हमें पहले पास्ट के बारे में बताया है कि कैसे ज़िंदगी बहुत अनश्योर थी, बीमारियां कैसे फैल जाती थी एक पर्सन से पूरी कम्युनिटी में, लेकिन इन प्रेजेंट वी हैव प्रॉपर सिस्टम ऑफ एवरीथिंग. वी हैव ट्रेन्ड डॉक्टर्स, वी हैव ट्रेन्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स, वी हैव the vaccines of different diseases. Now we are successful just because of the use of scientific method. These are the most important synonyms that we have discussed during reading. Happenings, वाक़यात, critical, तनकीद नगार होना, uncertain, गैर यकीनी, fortunate, खुशकिस्मत, unbelievable, नाकाबिले यकीन, prevention, बचाओ, ancestors, आबाओ अजदाद. These are the important additional questions जो ड्यूरिंग में जहाँ पर है वहाँ पर पॉप अप हो जाएंगे. फर्स्ट है what happened to most of the babies before reaching the age of 6, यानी कि बहुत सारे बच्चे 6 साल से पहले उनके साथ क्या होता है. तो हमने पढ़ा था they involved or they suffered from different diseases. सेकेंड है who was considered fortunate in past, पास्ट में खुशकिस्मत कौन माना जाता था. Who could live more than 30 years, जो 30 साल से ज़्यादा का वक़्त गुजार लेता था. लास्ट क्वेश्चन, how many years have been added to the expected length of a man's life, कि साइंस की बदौलत एक इंसान की ज़िंदगी में कितना टाइम पीरियड ऐड किया गया है. तो हमने पढ़ा था पहले 30 और अब लगभग 70, यानी कि more than 30 years have been added to the expected length of a man's life. ओके, अब इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स भी हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं. अब इनको आपने अच्छे से याद करना है. ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी.